Okay, so let's look at question number 7. A fair coin is flipped twice and it is known that at least one tail is observed. The probability of getting two tails is. So this is the question from conditional probability that you have given, that it is known that at least one tail is observed. So if you flip the coin twice, what would be the total possible outcomes? So it can be that on two tosses you will get head or maybe head tail, or tail head or head tail, sorry, tail, right? So these are the total possibility that you can get from tossing the coin twice. Now it is known that you are getting at least one tail is observed. So अगर ये आपका सैम्पल स्पेस है, नाउ इफ आई आस्क यू that after observe after observing that this thing that you are getting one tail, how the sample space will look like, what are the elements that will be in the sample space, in the revised sample space. So these elements will be head tail, tail head, and tail. So now you will have to find the probability in this sample space, right? So it is conditional probability. You have given this condition, and now you will have to find this the probability that you will the probability that getting two tails. So probability that getting two tails out, if you look at this revised sample, that is the one that is favorable case out of this three. So the correct answer for this 1/3. Now let's look at one more easy question. So that is question number 4. The mean of the observation of 50 observation of process is 12. So you have given that the mean of first 50 observation is 12. If 51 ऑब्जर्वेशन इज, जो 91वां आपका ऑब्जर्वेशन है, 51st ऑब्जर्वेशन वो क्या है, 18 है, देन द मीन ऑफ फर्स्ट 51 ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोसेस इज. सो आप ये देखो कि जो आपका 50 ऑब्जर्वेशन था उसका मीन कितना था, 12 था, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पर्सन है, 50 पर्सन है, सबके पास जो है 12 है, ठीक है, 12 यही होता है ना मीन का मतलब. नाउ अगर आपके पास ये 91वां पर्सन आया, 51st जो पर्सन आया वो क्या लेकर के आया, 18 लेकर के आया, ठीक है. अब पूछ रहा है कि ये टोटल जो 91 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन क्या होगा. अब देखो, अगर ये जो 51th पर्सन है, ये जो 91वां नंबर का पर्सन है, अगर ये 12 लेकर के आया रहता तो मीन कितना रहता, फर्स्ट 51 पर्सन का 12 ही रह जाता, राइट? लेकिन ये 12 ना ला करके 18 लेकर के आया है, मतलब ये कितना ज़्यादा लेकर के आया है, 6 ज़्यादा लेकर के आया है. तो ये 6 जो है ना, ये टोटल 91 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो टोटल 91 में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 51. तो हर एक का मीन जो है इस क्वांटिटी से बढ़ जाएगा. तो जो 91% का जो मीन होगा ना वो इतना होगा, 12 + 6 डिवाइडेड बाई 51. नाउ यू कैन कैलकुलेट एंड गेट द आंसर. So you will get 12.117, that is equal to 12.12. So option B is correct.